Hello students, today we are going to discuss about the collisions. Collision क्या है? Collision means simply hitting of two different objects which are in moving conditions. दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा गए, दैट इज कॉल्ड कोलिजन्स. दैट इवेंट इज कॉल्ड कोलिजन्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, our car accident, bus accident, or any road accidents, or your carom strikers, or anything you can take in which two objects are in moving and they are going to collide with each others, right? What about the definitions? An isolated event in which two or more moving body exert force on each other for a short times. It is about a very short time intervals. बहुत ही कम टाइम के लिए ये events we can notice, right? So they will exert force on each other. If two objects are coming to each other and they will strike, then what happens? One exerts some force on the another objects, and that second object also exerts some force on the first object. That means they will exert force on each other, right? Next, types of collision. Types of collisions means what? It may be different type of collisions are there. If we are going to discuss the types, then here three different types of collisions we can notice. One is your elastic collisions. Collisions means your for example, if we are seeing a rubber band, right, and if we stretch that rubber band and just leave it, then what happen? It will come to its original shape and size. Means जो अपना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हटा देने के बाद वो अपना शेप में वापस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक, राइट? So in elastic collisions, what happened? Kinetic energy is conserved in nature. Momentum is conserved in nature. That means initial kinetic energy must be equals to final kinetic energy after collisions. So no loss of kinetic energy we can say. Okay. But in case of the inelastic collisions, some part of the kinetic energy is lost. That means some part, that means पूरा चेंज नहीं होगा, बट कुछ यू विल चेंज, एंड आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन्स इफ विल नोटिस दैन दैट आर नॉट इक्वल्स. कंप्लीटली इनइलास्टिक मीन्स अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद वो अपना शेप चेंज कर रहा है और उसका शेप में वो और कभी भी वापस नहीं आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक बोटल्स, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स एंड इट विल प्रेस एट एनी पॉइंट्स, राइट? सो या फिर टूट गया या फिर कहीं पर वो मीन्स कंप्रेस हो गया, सो क्या होगा? वो अपना ओरिजिनल शेप में कभी नहीं आएगा. मीन्स दैट वन इज ए प्लास्टिक बॉडी, सो दैट इज योर कम्प्लीटली इनइलास्टिक वी कैन से. ओके, then initial kinetic energy is completely lost and initial and final kinetic energy are not equal. In that case, completely it will change. That is called completely inelastic. Now let's have a look about the difference between these three. If we discuss about the elastic collisions, then पहले initial and final दोनों को difference लेते हैं. ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट्स. अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसका मास m1 है, उसका वेलोसिटी v1 है, राइट? दिस वन विल मूव टुवर्ड्स द राइट. हियर अनदर ऑब्जेक्ट इज देयर, मास m2, उसका वेलोसिटी ले लेते हैं 0, v2 इज योर 0. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट एक जगह पर रेस्ट पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट आकर उसको स्ट्राइक कर रहा है, राइट? सो इफ m2 इज इन रेस्ट, सो v2 इज योर 0. दिस वन इज द इनिशियल कंडीशंस. व्हाट अबाउट द फाइनल कंडीशंस इन इलास्टिक बॉडी? अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर रेस्ट पे आ रहा है, इसको स्ट्राइक किया, देन व्हाट हैपेंड? दिस ऑब्जेक्ट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट वन एंड द first object will come to the rest, right? So this will be the case. यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? m1 यहाँ पर रेस्ट पे आ जाएगा कि
and m2 will move with velocity v1. that means जो वेलोसिटी m1 का था वही वेलोसिटी m2 का हो जाएगा. And here if we'll discuss about the kinetic energy, then what happened? Total kinetic energy before collision is your half m into m1 into v1 square. Okay. If we are taking two same mass, then what happened? m1 is equals to m2. So half m1 v1 square is equals to here half m2 v1 square, and m1 and m2 both are equal. We are taking, so both kinetic energy are equal. So no loss of kinetic energy in inelastic case. If we discuss about the inelastic case, then what happened? Let's assume the same things. Here this one is your initial positions and this one is your final, right? So initial and final conditions इसका चेक करते हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर m1 है, उसका वेलोसिटी v1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 and your velocity is 0, that means second object is in rest positions, right? Generally after collisions, these two objects are moving in a different velocity, right? So यहाँ पर कोलाइड होने के बाद क्या होगा? m1 कुछ वेलोसिटी में मूव कर रहा है v1 डैश, एंड m2 दूसरे वेलोसिटी में मूव कर रहा है, दैट मीन्स कंप्लीटली चेंज, सो v2 डैश. सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ m1 v1 square. This one is our kinetic energy, right? And here kinetic energy is your how much? Kinetic energy half m1 v1 dash square plus half m2 v2 square. That means here kinetic energy will change, or some part of the kinetic energy will change, because m1 is also moving, that's why some part of the kinetic energy will change. Next, in complete inelastic, if we'll discuss, then if this one is our initial and final conditions, let's have a look. Then let's take the same conditions. Here m1 is there, velocity is v1, m2 is there, m2 velocity is 0. दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. ओके. नेक्स्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे इसका, तो फाइनल में पोजीशंस में आफ्टर कोलिजन्स व्हाट विल हैपन? अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह पर रेस्ट पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, देन इन कम्प्लीटली इन इलास्टिक बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस. इफ विल डिस्कस वन डायमेंशनल एनालिसिस, देन से उसी डायरेक्शंस में वो दोनों मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे. मतलब यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट है, इधर दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको लेके ये इधर मूव करेगा. ओके, दैट मीन्स here the conditions will be like this. This one is your m1, this one is your m2. They will move in a different velocity. Let's take your v dash. Okay, is the final velocity. So what about the kinetic energy before collisions? Half m1 v1 square. Here kinetic energy is your how much? Half m1 plus m2 into v dash square. Right? So that means here kinetic energy is completely changed to the final kinetic energy. So this one is a comparison about the types of collisions: elastic, inelastic and completely inelastic case. Right? So in completely inelastic, object never come to its original shape and size. Inelastic, partly it will change, maybe some elastic nature will be there, and elastic, your original shape and size will come after removing the external force.